चैप्टर भी याद नहीं है क्या? मैम आई थिंक द क्रेविंग ब्रेन था, हाउ टू क्रिएट न्यू। हाँ, चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 से हम लोग शुरू करेंगे। लेट मी Yes, शेयर ma'am. माय स्क्रीन फर्स्ट। चलिए थोड़ा सबसे पहले ब्रीफ कर दूं, काफी गैप हो गया इसलिए। बुक किस चीज पे है? पावर ऑफ हैबिट किस चीज पे बुक है? शुभम कुमार रोलेटी। यस मैम। ये बुक किस चीज पे है या किस चीज की बुक है, इस तरीके से बताइए। हमारा हैबिट कैसे हमारे लाइफस्टाइल को मतलब चेंज कर सकता है मैम। क्या चीज? लाइफस्टाइल को मैम। लाइफस्टाइल पे बेसिकली ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक है, ठीक है। को Yes, इसमें बेसिकली मेन मकसद क्या है राइटर का, कि हम, क्या मकसद है? सेल्फ असेसमेंट। लाइक फॉर एग्जांपल हर एक इंडिविजुअल का अपना गोल होता है, ठीक है। बीइंग अ स्टूडेंट आपका भी गोल है, ठीक है। सारे लोग चाहते हैं कि अच्छा परसेंटेज आए, बट Yes, क्या सारे लोग सक्सेसफुल होते हैं? नो मैम। नॉट पॉसिबल, है ना, पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या है, इसी चीज को रीड करने के लिए हैबिट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यस मैम। ठीक है, हैबिट की जरूरत पड़ती है जो डिटरमाइन करता है आपका फ्यूचर, राइट। तो इसी हैबिट पे आपका ये बुक है, ठीक है। तो राइटर कौन है? हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक? गुड आफ्टरनून मैम। मैम याद नहीं है अभी। मनीष? मैम चार्ल्स डुहिग। चार्ल्स डुहिग। चार्ल्स डुहिग इज द राइटर ऑफ द बुक। यस मैम। और चैप्टर 1 में हम लोगों ने क्या किया था? चैप्टर 1 वाज द हैबिट लूप। द हैबिट लूप। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया? एक मैम मिनट लाऊं, वॉल्यूम कम करना होगा। टेल मी, फर्स्ट चैप्टर जो है आपका हैबिट लूप। आकृति? मैम वो यूजन के कुछ यूजन पे डिपेंड, यूजन वाला मैम स्टडी का फर्स्ट चैप्टर किस चीज यूजन पे था मैम। उसमें मैम माइंड, मैम कुछ बीमारी था उसकी वजह से, मैम उसको कैसे ठीक किया जाए उस पर रिसर्च करके। बेसिकली साइंटिफिक स्टडी है इस पे। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा हैबिट लूप के बारे में, ठीक है। 3 था स्पेसिफिकली हैबिट कैसे फॉर्म होता है, क्या है 3, क्या क्या फैक्टर है? तीन फैक्टर क्या है? सब बोल के बैठ गए। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड था। यस मैम, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। तो क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड, ये 3 है जो आपका बनाता है हैबिट लूप। तो फर्स्ट चैप्टर जिनके पास बुक है तो ये आप देखते होंगे। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा है कैसे कोई हैबिट काम करता है, ठीक है। चैप्टर 1 इज अबाउट हाउ हैबिट वर्क्स, ठीक है, ये रहा। और चैप्टर 2 में हम लोग को डिस्कशन करना था, क्या है चैप्टर 2? क्रेविंग ब्रेन, जो आपका स्पेसिफाई कर रहा है हाउ टू क्रिएट न्यू हैबिट, ठीक है। तो चैप्टर 2 से हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, ये रिसर्च याद ही होगा आप लोगों को, रैट पर रिसर्च हुआ था। टी शेप का टनल है। कैसे फर्स्ट कोई भी काम करते हैं तो दिमाग कितना मतलब फ्रीक्वेंटली एक्टिव रहता है, कितना काम करता है, और जब कोई भी चीज रेगुलर होने लगता है तो जो पेस है ब्रेन का वो थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। मतलब दिमाग उतना काम नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली होते जाता है। तो इस तरीके से चैप्टर 1 में हम लोगों ने देखा था कि 40% हम लोग का जो काम होता है वो हैबिट बेस्ड होता है, ठीक है। ज्यादा हम लोगों को सोचना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली हैबिट की वजह से हो जाता है, ठीक है। और अब हम लोग चलिए चैप्टर 2 की तरफ। तो हालांकि 1-2 स्टैंजा हुआ होगा, तो गैप होने की वजह से बेटर स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 2 ओनली, ठीक है। सो प्रणव, रोल 4।
Pranav, you're there? Yes, ma'am. Start reading, turn on your camera. और मैं पहले से अनाउंस कर देती हूँ, जिनका ऑन है कैमरा उन्हीं का अटेंडेंस बनेगा, इसीलिए कोई झूठ मूठ का अगर ज्वाइन कर लिए हैं सिर्फ अटेंडेंस के लिए तो प्लीज लीव द क्लास। जिनका ऑन रहेगा, जो पढ़ेंगे, उन्हीं का ही अटेंडेंस बनेगा। ठीक है? मैम मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैम बेड रेस्ट में है। ओके देन मनीष स्टार्ट। Okay. बाकी लोग कैमरा ऑन करके बैठे। One day in the early 1990s, a prominent American executive named Claude C. Hopkins was approached by an old friend with a new business idea. The friend had discovered an amazing product. He explained that he was convinced it would be a hit. मैम ये हो गया था। मालूम है, इसलिए मैं बोल, दो कंप्लीट नहीं हुआ है, दो स्टैंजा हुआ होगा, क्योंकि गैप है तो बेटर स्टार्ट फ्रॉम हियर। It was a toothpaste, a minty, a frothy concussion he called Pepsodent. There were some dicey investors involved. One of them had a string of busted land deals. Another, it was rumored, was connected to the mob. But this venture, the friend promised, was going to be huge. If that is, Hopkins would be consent to help design a national promotional campaign. इस चैप्टर में ये फर्स्ट पैराग्राफ में क्या देख रहे हैं हम लोग, ये जो हॉपकिन है वो प्रोमिनेंट अमेरिकन एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। इनके जो ओल्ड फ्रेंड है वो बिजनेस आइडिया दे रहे हैं इनको, किस चीज का, एक अमेजिंग प्रोडक्ट, किसके बारे में, एक टूथपेस्ट है जो मिंटी है, फ्रोथी है, पेप्सोडेंट के बारे में डिस्कशन हो रहा था। और ये इन्वेस्टर को क्या बोला जा रहा है, डाइसी इन्वेस्टर, ठीक है, नॉट अ साउंड माइंड। डाइसी का मतलब ये होता है द इन्वेस्टर्स हु आर नॉट ऑफ साउंड माइंड। क्यों, वाई, ये क्यों आपको बोला जा रहा है, इन्वेस्टर्स को क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि एक के ऊपर कोई लैंड का कुछ बस्टेड लैंड डील था, ठीक है, कुछ घपला था लैंड का, उसका आरोप था उसके ऊपर, ठीक है। इट वाज कनेक्टेड टू द मॉब बट दिस वेंचर द फ्रेंड प्रॉमिस वाज गोइंग टू बी ह्यूज। बाकी फ्रेंड जितने फ्रेंड है वो बोल रहे थे, लेकिन ये वाला जो बिजनेस आइडिया है वो अच्छा होने वाला है। If that is, Hopkins would consent to help design a national promotional campaign. अगर Hopkins help करे ये promotional campaign organize करने का, then okay, proceed. Hopkins at the time was the top of a booming industry that had hardly existed a few decades earlier. Advertising. Hopkins was the man who had convinced the Americans to buy skilled beer by boasting that the company cleaned their bottles with live steam, while neglecting to mention that every other company used the exact same method. He had seduced millions of women into purchasing Palmolive soap by proclaiming that Cleopatra had washed with it. Despite the sputtering protests of outraged historians, he had made profit. Protest of outraged historians. Yes, ma'am. नाराज हिस्टोरियन, जो हिस्टोरियन है, जो साहित्यकार है, वो लोग इस स्टेटमेंट पे नाराज हुए थे। किस स्टेटमेंट पे? He had made puffed wheat famous by saying that it was a short form guns until the grains puffed to 8 times normal size. He had turned dozens of previously unknown products, Quaker oats, Goodyear tires, the Bisil carpet sweeper, Van Camp's, pork and beans into household names. And in the process, he had made himself so rich that his best-selling autobiography, My Life in Advertising, devoted long passages to the difficulties of spending so much money. Claude Hopkins was best known for a series of rules he coined, explaining how to create new habits among consumers. These rules would transform industries and eventually became conventional wisdom among marketers, educational reformers, public health professionals, politicians, and CEOs. Even today, Hopkins rules influence everything from how we buy cleaning supplies to the tools governments use for eradicating disease. They are fundamental to creating any new routine. However, when his old friend approached Hopkins about Pepsodent, the ad man expressed only mild interest.
It was no secret that the health of Americans was in steep decline. As the nation had become wealthier, people had started buying larger amounts of sugary, processed foods. When the government started drafting men for World War First, so many recruits had rotting teeth that officials said poor dental hygiene was a national security risk. Yet, as Hopkins knew, selling toothpaste was a financial suicide. There was already an army of door-to-door salesmen hawking dubious tooth powders and elixirs, most of them going broke. The problem was that hardly anyone bought toothpaste. रुकिए इसको हम ब्रूक पढ़ेंगे क्या? यहाँ से पढ़िए. मैम ब्रोक होगा ना. तो अब तक हम लोग क्या देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये प्रपोजल लेके फ्रेंड्स आए, लेकिन यहाँ पे अभी बताया जा रहा है कि अब जो हॉपकिन है वो अग्री नहीं हुए इस आइडिया को लेके, कारण कि ऑलरेडी मतलब एक तरीके से इसको फाइनेंशियल सुसाइड बोला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे सेल्समैन अवेलेबल हैं जो और बहुत सारे प्रोडक्ट इस टाइप का सेल कर रहे हैं. डोर टू डोर मैम सेल्स कर रहे हैं. चलिए. The problem was that hardly anyone bought toothpaste because despite the nation's dental problem, hardly anyone brushed their teeth. So Hopkins gave his friend's proposal a bit of thought and then declined. He had to stick with soaps and cereals. नहीं, पहले से वो स्टिक सोप और सिरल सेल करते थे, ठीक है, यानी he did stick with, मतलब जो अब वो कर रहे हैं उसी के साथ वो स्टिक रहना चाहे. किसके साथ? सोप और सिरल जो सेल कर रहे थे वो क्विकर का नाम अभी ऊपर आया है शायद. वो जो क्लियोपेट्रा के बारे में आप डिस्कशन किए, पामोलिव सोप जो एडवर्टाइज किया जा रहा था, तो इन्हीं दोनों पे ये स्टिक रहना चाहे, और वो जो प्रपोजल था टूथपेस्ट का उसको साइड कर दिया गया. आगे चलिए. He said, I did not see a way to educate the laity in technical toothpaste theories. Hopkins explained in this autobiography. The friend, however, was persistent. He came back again and again, appealing to Hopkins' considerable ego until eventually the ad man gave in. I finally agreed to undertake the campaign if he gave me a 6 months option on a block of stock. Hopkins wrote, the friend agreed. It would be the wisest financial decision of Hopkins' life. Within 5 years of the partnership, हाँ, तो फाइनली ये जान लीजिए, हाँ यहाँ जान लीजिए कि अब तक राजी नहीं हो रहे थे कि अब लेकिन ये एडमैन गिव अप, मतलब अब एडमैन राजी हो गए, वो गिव अप कर लिए कि हाँ वो जो एग्री नहीं कर रहे थे इस चीज के लिए वो अब एग्री करना शुरू कर दिए. उसके बाद फिर क्या डिस्कशन हो रहा है, बाद में पता चल रहा है कि ये एक वाइजेस्ट डिसीजन था, फाइनेंशियल डिसीजन हॉपकिंस के लाइफ में. चलिए आगे. Within 5 years of the partnership, Hopkins turned Pepsodent into one of the best known products on earth, and in the process helped create a toothbrushing habit that moved across America with startling speed. Soon everyone from Shirley Temple to Clark Gable was bragging about their Pepsodent smile. By 1930, Pepsodent was sold in China, South Africa, Brazil, Germany, and almost anywhere else Hopkins could buy ads. A decade after the first Pepsodent campaign, pollsters found that toothbrushing had become a ritual for more than half the American population. Hopkins had helped establish toothbrushing as a daily activity. The secret to his success, Hopkins would later boast, was that he had found a certain kind of cue and reward that fueled a particular habit. It's an alchemy so powerful that even today the basic principles are still used by video game designers, food companies, hospitals, and millions of salesmen around the world. Eugene Polly taught us about the habit loop, but it was Claude Hopkins that showed how new habits can be cultivated and grown. So what exactly did Hopkins do? He created a craving, and that craving, it turns out, is what makes cues and rewards work. That craving is what powers the habit loop. तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें 3 ही फैक्टर्स को हैबिट लूप में शामिल किया गया था, दैट इज क्यू और रूटीन और रिवॉर्ड. यहाँ पे ये देखा गया इस स्टडी के बाद, इस साइंटिफिक स्टडी के बाद,
कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, जहाँ लोग ब्रश ही नहीं कर रहे थे वहां पे आप सेल कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से ये नहीं बात हो गया कि गंजे को कंघी सेल करना है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रेविंग क्रिएट किया गया। तो यहाँ पे और चौथा फैक्टर लाया गया हैबिट लूप के, हैबिट लूप में, दैट इज क्रेविंग। यानी किसी भी चीज का अगर आप लालसा क्रिएट कर देंगे, क्रेविंग इज व्हाट, लालसा, ठीक है। तो किसी भी चीज का अगर आप लालसा क्रिएट कर देंगे वो ऑटोमेटिकली नया हैबिट बन जाता है, ठीक है, हैबिट फॉर्मेशन में वो शामिल हो जाता है। तो यहाँ पे चैप्टर 2 जो बात कर रहा है तो उसका डिस्कशन यहाँ पे किया गया है इसी पैराग्राफ में, ठीक है। तो हम अगर क्रेविंग क्रिएट करेंगे तो कोई भी नया हैबिट हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कोई और पढ़िए। मैम, पढ़िए। throughout his career, one of Claude Hopkins' signature tactics was to find simple triggers to convince consumers to use his products every day. He sold Quaker oats, for instance, as a breakfast cereal that could provide energy for 24 hours, but only if you ate a ball every morning. He hawked tonics that cured stomach aches, joint pain, bad skin, and womanly problems, but only if you drank the medicine at symptoms' first appearance. Soon people were devouring oatmeal at daybreak and chugging from little brown bottles whenever they felt a hint of fatigue, which, as luck would have it, often happened at least once a day. To sell Pepsodent then, Hopkins needed a trigger that could justify the toothpaste's daily use. He sat down with a pile of dental textbooks. It was dry reading, he later wrote, but in the middle of one book I found a reference to the Mukin plaques on teeth, which I afterward called the film. That gave an appealing idea. I resolved to advertise this toothpaste as a creator of beauty to deal with that cloudy film. In focusing on tooth film, Hopkins was ignoring the fact that this same film has always covered people's teeth and hadn't seemed to bother anyone. The film is a naturally occurring membrane that builds up on teeth regardless of what you eat or how often you brush. People had never paid much attention to it, and there was little reason why they should. You can get rid of the film by eating an apple, running your finger over your teeth, brushing, or vigorously swirling liquid around your mouth. Toothpaste didn't do anything to help remove the film. In fact, one of the leading dental researchers of the time said that all toothpaste, particularly Pepsodent, were worthless. यहाँ तक हम That लोग क्या देख didn't रहे हैं? stop. एक मिनट। यहाँ तक हम लोग क्या देखे कि यहाँ जहाँ पे लोग ब्रश नहीं करते थे तो वो क्रेविंग कैसे लाए, ठीक है। तो वो अब डिटेल में बताया गया कि वहाँ रिसर्च में जो बुक पढ़ रहे थे उसमें उन्होंने डिस्कशन देखा म्यूकिन प्लेग का, ठीक है, जिसको फिल्म का नाम दिया उन्होंने, ठीक है, कि आपके दांत पे एक लेयर जम जाता है, ठीक है, दांत Yes, ma'am. ऑब्वियसली वो हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब आप नॉर्मल सेब भी अगर खाते हैं या फिर अगर यहाँ कुल्ला की बात हो रही है, स्क्विरलिंग लिक्विड मतलब क्या हुआ, आप अगर Yes, ma'am. विगरसली अगर कुल्ला Chapel. करते हैं तो अगेन वो कैब आप देखिए, ये आप बहुत लोग ये वर्ड यूज करिए डेली, क्योंकि ये डेली हैबिट में आता है, तो वो कैब भी Yes, अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सब बुक वगैरह पढ़ने का एक तरीके से समझिए बेनिफिट होता है। सो इससे आपका हो जाता है खत्म। उसके बाद और क्या था, रनिंग योर फिंगर, Running finger. ये सब तरीके से आप वो फिल्म ऐसे भी हटा सकते हैं। और रिसर्चर के अकॉर्डिंग, जो डेंटल रिसर्चर है, Ma'am, उनका कहना है Pepsodent कि worthless पेप्सोडेंट था. वर्दलेस है। कोई भी टूथपेस्ट आपका कुछ दांत वगैरह साफ नहीं करता, या आप नॉर्मल ये सारी चीज से भी कर लेते हैं, लेकिन वो इस तरीके से एडवर्टीजमेंट के थ्रू शो किए हैं आपके, कि लोगों को सही में लगा कि ये एक कंसर्न है और हम लोगों को ये फिल्म हटाना चाहिए और दांत को जो सड़ने से वो बचाना चाहिए, ठीक है। Yes, ma'am. चलिए That did. Start करें, ma'am. That didn't stop Hopkins from exploiting his discovery. Here he decided what was a cue that could trigger a habit. Soon cities were plastered with Pepsodent ads. Just run your tongue across your teeth. ये प्लास्टर विद पेप्सोडेंट ऐड का मतलब
Soon Ma'am, cities where बहुत जल्दी ही सारे सिटीज में जो है पेप्सोडेंट का एड्स जो है बहुत ज्यादा भर गया। इन्फ्लुएंस दे रहा था लोगों पे। तो प्लास्टर मींस पूरा, हाँ, भर जाना, पूरे सिटी में हर जगह पेप्सोडेंट का एड देखने को मिल रहा था। ठीक है, मिल रहा था। Just run your tongue across your teeth. Read one. You will feel a film. That's what makes your teeth look of color and invites decay. Note how many pretty teeth are seen everywhere. Read another ad featuring smiling beauties. Millions are using a new method of teeth cleansing. Why would any woman have a dingy film on her teeth? Pepsodent removes the film. The brilliance of these appeals was that they relied upon a cute tooth film that was universal and impossible to ignore. Telling someone to run their tongue across their teeth, it turned out, was likely to cause them to run their tongue across their teeth. And when they did, they were likely to feel a film. Hopkins had found a cue that was simple, had existed for ages, and was so easy to trigger that an advertisement could cause people to comply automatically. Comply is again also good word. Comply automatically means to follow something automatically. Yes, To ma'am. follow certain rules or regulation. Yes. Moreover, the reward as Hopkins envisioned it was even more intensing. Who, after all, doesn't want to be more beautiful? Who doesn't want a prettier smile, particularly when all it takes is a quick brush with Pepsodent? After the campaign launched, a quiet week passed. Then, too, in the third week, demand exploded. There were so many orders for Pepsodent that the company couldn't keep up. In 3 years, the product went international and Hopkins was crafting ads in Spanish, German, and Chinese. Within a decade, Pepsodent was one of the top-selling goods in the world and remained America's best-selling toothpaste for more than 30 years. Before Pepsodent appeared, only 7% of Americans had a tube of... Yes, हाँ, ma'am. ये मैं बता दूं, बैच 2 में तो ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी हूँ, आपका एड ऑन ये वाले का भी मार्क्यू होगा। ठीक है, तो ये मंथ के एंड में इसका भी मैं मार्क्यू ले लूंगी। ठीक है, तो थोड़ा फोकस रहिए। अब मार्क्यू में इसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, लाइक आप चैप्टर 1 में कौन कौन सा कैरेक्टर है, ठीक है, जस्ट टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग और कितना फोकस होके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अनाउंस अभी से कर रही हूँ, अभी आपका शुरू हुआ है, तो फोकस रहिए। मार्क्यू में अलग से आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। राइट, फिर राइटर का नाम क्या है, बुक के बारे में क्या, मतलब बुक किसके बारे में बात कर रहा है, किस चैप्टर में क्या हुआ, राइट, यही सब क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, आगे बढ़िए। अब कोई और पढ़िए। आकांक्षा जायसवाल। आकांक्षा जायसवाल, आपका कैमरा अभी ऑन हुआ है क्या? नो मैम, पहले से ऑन था। पहले से तो खैर नहीं था। चलिए ठीक है, यहाँ से पढ़िए। Before Pepsodent appeared, only 7% of Americans had a tube of toothpaste in their medicine chests. A decade after Hawkins, ध्यान से, a decade after Hawkins' ad campaign went nationwide, that number had jumped to 65%. By the end of World War II, the military downgraded concerned about downgraded concerns about recruits teeth because so many soldiers were brushing every day. I made for myself $1 million on Pepsodent. Hawkins worth a few years after the product appeared on slips. The key, he said, was... जानबूझ के मिस्टेक हो रहा है आपसे, ऐसा नहीं कि ये सब आप पढ़ना नहीं चाह रहे, आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। The key, he said, was that he had सबसे learned... पहले यहाँ हॉपकिंस रोट है और appeared on sleeves है क्या, सेल्फ्स है?
है ना? अब आगे पढ़िए. The Yes, key. ma'am. Yes, ma'am. The key, he said, was that he had learned the right human psychology. This psychology was grounded into two basic rules. First, find a simple and obvious cue. क्यों Second, मतलब रविराज मैम चैप्टर 1 से क्यों देख रहे हैं हम लोग? व्हाट डू यू मीन बाय क्यों? फाइंड अ सिंपल एंड ऑब्वियस क्यू. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैम क्यूज मैम समथिंग मैम कुछ एक मिस्टेरिकल फैक्ट मतलब कह सकते हैं. कोई भी चीज का अगर संकेत आपको मिल रहा है, यहाँ पे राइट ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बात हो रही है कि ह्यूमन साइकोलॉजी में इन्होंने दो बेसिक रूल पकड़ा है. एक तो कोई चीज का संकेत दो, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम है आपके पास. लाइक अभी यहाँ पे दांत पे आपका फिल्म बैठना इज नॉट अ गुड सिंबल. तो ये क्या हो गया? एक संकेत हो गया कि आपका दांत मतलब सड़ रहा है या खराब हो रहा है. ठीक है, तो आपको मैम सिग्नल टू डू समथिंग. हाँ, सिग्नल होना या संकेत देना, अगर आप हिंदी पूछें तो उसको संकेत को कहते हैं क्यू. ठीक है, तो ये दो Cue. बेसिक रूल. पहला है फाइंड द सिंपल एंड ऑब्वियस क्यू. दूसरा सेकंड, क्लियरली डिफाइन द रिवॉर्ड. यानी ब्रश करने के बाद आपका चमकीला दांत, दैट इज रिवॉर्ड. ठीक है, प्रोसीड. यहाँ से आगे पढ़िए रविराज. Yeah, ma'am. Okay, ma'am. If you get those elements right, Hopkins promised it was like magic. Look at Pepsodent. एक मिनट. मैजिक, मैजिक, It was like magic. मैजिक है क्या? Magic. मैजिक, जी. Magic, ma'am. फिर से Yeah, वही ma'am. बोल रहे हैं. मेरा प्रोनाउंसिएशन ना गड़बड़. मैजिक, मैजिक नहीं होगा, मैजिक. Magic. हाँ, अब बढ़िए. Magic. Look at Pepsodent. He had identified a Q tooth film and a reward beautiful teeth that had persuaded millions to start a daily ritual. Even today, Hopkins rules are a staple of marketing textbooks and the foundation of millions of ad campaigns. And those मार्केटिंग टेक्स्ट बुक कहने का मतलब क्या हुआ कि ये मेन है. आपकी कोई भी एडवर्टीजमेंट कंपनी जो है इस रूल को जरूर फॉलो करती है. ठीक है, मेन इंग्रेडिएंट जैसे आप बोल सकते हैं. ठीक है. अच्छा मतलब मेन इंग्रेडिएंट. अरे मेन इंग्रेडिएंट जैसे आप कोई चीज बनाते हैं तो उसमें मेन इंग्रेडिएंट होता है कि भाई ये चीज डालना ही डालना है. सेम वे यहाँ पे है कि स्टेपल करना मतलब क्या कि ये पॉइंट टू बी नोटेड आप कह सकते हैं. ठीक है, कि ये आप क्यू और रिवॉर्ड जरूर होना चाहिए आपके एडवर्टीजमेंट में. यानी प्रॉब्लम दीजिए देन सॉल्यूशन दीजिए. Yes. Okay. And those same principles have been used to create thousands of other habits, often without people realizing how closely they are having, ma'am, है ना, having to Hopkins formula. Studies of people who have successfully started new exercise routines, for instances, so they are more likely to stick with a workout plan if they choose a specific cue, such as running as soon as they get home from work, and a clear reward such as a beer or an evening of guilt-free television. मैम पढ़े आगे. Research on dieting says creating new food habits requires a predetermined cue, such as planning menu in advance, and simple rewards for dieters when they stick to their intentions. The time has. अब पूनम कुमारी आप पढ़िए रोल 42.
रविराज इम्प्रूव हो रहा है आपका? थोड़ा रेगुलर रीड और किया करिए, जो वो वाला है ना वो चला जाए। Yes, ma'am. Okay, ma'am. The time has come when advertising has in some hands reached the status of a science. Hopkins wrote, advertising, once a gamble, has thus become under able direction, one of the safest of business ventures. It's quite a boast. However, it turns out that Hopkins' two rules aren't enough. There are also a third rule that must be satisfied to create a habit, a rule so subtle that Hopkins himself relied on it without ignore a box of donuts to how a morning job can become a nearly effortless routine. ओके, लेकिन एक लाइन आप मिस कर गए, knowing it existed. Knowing it existed, it explains everything from why it's so hard to ignore a box of donuts to how a morning job can become a nearly effortless routine. तो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया, ऊपर ही हम लोग देख लिए कि क्रेविंग हम लोग को ढूंढना पड़ता है, ठीक है, वो लालसा लाना पड़ता है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि एक तो दो रूल के अलावा भी एक और रूल है जो जरूरी है, ठीक है, कोई भी नए हैबिट को फॉर्म करने के लिए। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे कोई डोनट क्या एक स्वीट डिश है, तो अगर आप स्वीट खाने के लिए मतलब समझिए हैबिचुएटेड है तो इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल होगा। वही अगर आप मॉर्निंग रूटीन में अगर आप जॉगिंग शामिल कर लीजिए और अगर ये रूटीन बन जाता है आपका, तो कैसे वो एफर्टलेस रूटीन हो जाएगा, मतलब एफर्टलेस लगेगा आपको। फर्स्ट डे जब आप जॉगिंग करेंगे तो टफ होगा, यही चीज अगर आप रेगुलरली करेंगे तो ये एफर्टलेस हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, इग्नोर अ बॉक्स ऑफ डोनट, और यहाँ पे जॉगिंग, राइट, इसके बारे में बात हो रही है कि जॉगिंग कैसे एफर्टलेस हो जाएगा, और जो डोनट जहाँ पे हम लोग बहुत हार्ड था इग्नोर करना, अब इसलिए हम इग्नोर भी कर पाए। आगे चलिए, अब ये वो वाला खत्म हो गया, आपका पेप्सोडेंट वाला काम खत्म हो गया। अब ये नया चीज आ रहा है। अब यहाँ से पढ़ेंगे युवराज, रोल 88। रोल 88, यू आर देयर? अभी कौन पढ़े? पूनम 42। आकृति, Can I read, ma'am? I want Akriti to read. So Akriti, you are not there. Roll 83. बेकार में आपका अटेंडेंस। Sorry, ma'am. My mic was muted. Okay, read from here. If we get the scientists and marketing executives at Procter & Gamble were gathered around a bit-up table in a small, windowless room, reading the transcript of an interview with a woman who owned 9 cats when one of them finally said what everyone was thinking. If we get fired, what exactly happens? She asked. Do security guards show up and walk us out, or do we get some kind of warning beforehand? The team's leader, a one-time rising star within the company named Drake Stimson, stared at her. I don't know, he said. His hair was a mess. His eyes were tired. I never thought things would get this bad. They told me running this project was a promotion. It was 1996 and the group at the table was finding out, despite Claude Hopkins' assertion was how utterly unscientific the process of selling something could become. They all worked for one of the largest consumer goods firms on earth, the company behind Pringles potato chips, Oil of Olay, Bounty paper towels, covered cosmetics, Dawn Downy, and Duracell, as well as dozens of other brands. P&G collected more data
data than almost any other merchant on earth and relied on complex statistic, statistical methods to craft their marketing campaigns. The firm was incredibly good at figuring out how to sell things. In the clothes washing market alone, P&G product cleaned one out of every two laundry loads in America. Its revenue topped $35 billion per year. However, Stimson's team, which had been entrusted with designing the ad campaign for one of P&G's most promising new products, was on the brink of failure. The company had spent millions of dollars developing a spray that could remove bad smells from almost any fabric, and the researcher in that tiny windowless room had no idea how to get people to buy it. अब यहाँ से नए प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन हो रहा है, दैट इज स्प्रे. ठीक है. Yes, ma'am. तो ब्रिंक ऑफ फेलियर मतलब ये ऑलमोस्ट फेलियर के कगार पे था. ठीक है. तो वो यहाँ पे रिसर्चर ये सोच रहे थे कि कैसे हम इस प्रोडक्ट को लोगों के अंदर इंड्यूस करें कि वो बाय करें. ठीक है, आगे देखिए. अब यहाँ देखिए कि स्प्रे का हैबिट कैसे जनरेट. यस. When one of the P&G Role 80. Yes, ma'am. Read The from here. spray had been created about 3 years earlier, when one of P&G's chemists was working with a substance called hydroxypropyl beta cyclodextrin, or HPBCD, in a laboratory. The chemist was a smoker. His clothes usually smelled like an ashtray. One day, after working with HPBCD, his wife greeted him at the door when he got home. Did you quit smoking? She asked him. No, he said. He was suspicious. She had been harassing him to give up cigarettes for years. This seemed like some kind of reverse psychology trickery. You don't smell like smoke, is all, she said. The next day, he went back to the lab and started experimenting with HPBCD and various scents. Soon he had hundreds of vials containing fabrics that smelled like wet dogs, cigars, sweaty socks, Chinese food, musty shirts, and dirty towels. When he put HPBCD in water and sprayed it on the samples, the scent were drawn into the chemical's molecules. After the mist dried, the smell was gone. When the chemist explained his finding to P&G's executives, they were uh, ecstatic. For years, yes, ma'am. For years, market research had said that consumers were clamoring for something that could get rid of bad smells, not mask them, but eradicate them altogether. When one team of researchers had interviewed customers, they found that many of them left their blouses or slacks outside after a night at a bar or party. My clothes smell like cigarettes when I get home, but I don't want to pay for dry cleaning every time I go out, one woman said. PNG, sensing an opportunity, launched a top secret project to turn HPBCD into a viable product. They spent millions perfecting the formula, finally producing a colorless, odorless liquid that could wipe out almost any fall odor. The science behind the spray was so advanced that NASA would eventually use it to clean the interiors of shuttles after they returned from space. The best part was that it was couch, old jacket, or stained car interior smell well scentless.
The project had been a major gamble, but PNG was now poisoned to earn billions if they could come up with the right marketing campaign. They started कोई और पढ़िए अब आगे बढ़ें? हमारी They decided to call it Febreze and asked Stimson, a शुभम मेरी आवाज नहीं 31 आ रही है क्या? मैम बहुत स्लो है, हाँ आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अभी ठीक है? यस मैम। हाँ मैं प्रीति को बोल रही हूँ पढ़ने के लिए। ओके ठीक है। प्रीति इज देयर? ओके रोल 89 आप पढ़िए। यस अच्छा आप यहाँ पे यस मैम। तो ऑन क्यों नहीं है कैमरा आपका? ऑन है मैम। कैसा ऑन है? स्क्रीनशॉट लेके भेजो मैं ग्रुप में अभी। ये ऑन का कैसा दिख रहा है? चलिए पढ़िए। Start from here. They decided to call it Febreze. They decided to call it Febreze and asked Sitmos, the 31-year-old. क्या हो गया आपको आज? कौन पढ़ रहा है? अच्छा विशाल पढ़ने लगा। ओके नहीं प्रीति आ गई तो पहले प्रीति को पढ़ने दीजिए फिर विशाल आप पढ़िए। They decided to call it Febreze and asked Stimson, a 31-year-old wonderkind with a background in math and psychology, to lead the marketing team. Stimson was tall and handsome, with a strong chin, a gentle voice, and a taste for high-end meals. I had rather my kids smoked weed than ate in McDonald's, he once told a colleague. Before joining PNG, he had spent 5 years on Wall What is the full Street form building of PNG, Priti? PNG. ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं PNG का फुल फॉर्म नहीं पता? किसको पता है? प्रॉक्टर एंड गैम्बल मैम। प्रॉक्टर एंड गैम्बल ऊपर से तो चलते ही आ रहा है। प्रीति यानी ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए बिफोर ज्वाइनिंग PNG. He had spent 5 years on Wall Street building mathematical models for choosing stocks. When he relocated to what is this? Cincinnati, place का नाम है. Cincinnati, where PNG was headquartered, he was tapped to help run important business lines, including Bounce fabric softener and Downy dryer sheets. But Febreze was different. It was a chance to launch an entirely new category of products, to add something to a consumer's shopping cart that had never been there before. All consumer shopping cart that had never been, all Stimson need to do was figure out how to make Febreze into habit and the product would fly off the shelves. How tough could that be? Stimson and his colleagues decided to introduce Febreze in a few test markets, Phoenix, Salt Lake City, and Boise. They flew in and handed out samples and then asked people if they could come by their homes. Over the course of 2 months, they visited hundreds of households. Their first big breakthrough came when they visited a park ranger in Phoenix. She was in her late 20s and lived by herself. Her job was to trap animals that wandered out of the desert. She caught coyotes, raccoons, the occasional mountain lion, and skunks, lots of skunks, which often sprayed her when they were caught. I am single and I would like to find someone to have kids with, the ranger told Stimson and his colleagues. While they sat in her living room, I go on a lot of dates. I mean, I think I am attractive, you know. I'm smart and I feel like I am a good catch.
but her love life was crippled. She explained because everything in her life smelled like Again, one good skunk. word, crippled. ठीक है, कुछ कुछ वर्ड है जो स्टार्ट यूजिंग, ये सब हम लोग डेली यूज कर सकते हैं. क्रिपल हो गया, आउटरेज हो गया. ठीक है. Her house, her truck, her clothing, her boots, her hands, her curtains, even her bed. She had tried all sorts of cures. She bought special soaps and shampoos. She burned candles and used expensive carpet shampooing machines. None of it worked. When I am on a date, I will get a whiff of something that smells like skunk and I will start obsessing about it. She told them. I'll start wondering, does he smell it? What if I bring him home and he wants to leave? I went on 4 dates last year with a really nice guy. आप रोल नंबर कौन पढ़ रहे थे? 89. विशाल. I went on 4 dates last year with a really nice guy. A guy I really liked, and I waited forever to invite him to my place. Eventually, he came over and I thought everything was going really well. Then the next day, he said he wanted to take a break. He was really polite about it, but I kept wondering, was it the smell? Well, I'm glad you got a chance to try beverage, Samson said. How you like it? She looked at him. She was crying. I want to thank you, she said. This spray has changed my life. After she had received samples of beverage, she had gone home and sprayed her couch. She sprayed her curtains, the rug and bed, sprayed her jeans, her uniforms, the interior of the car, and the bottle ran out. She got another one and sprayed everything else. I have asked all of my friends to come over and woman said they can't smell it anymore. The skunk is gone. By now, she was crying so hard that Sintma's colleagues was patting her on shoulders. Thank you so much. Patting नहीं, patting. Patting होता ना, The woman शाबाशी को said, देते I हैं. feel so free. Thank you. This product is so... Yes, ma'am? ये जो आप पढ़े, क्या पढ़े आप इसको? Patting. Patting, हाँ, ठीक. Patting. Sintma sniffed her air inside her living room. He could not smell anything. We are going to make fortune with this stuff, he thought. Samson and his team went back. यहाँ तक रहने में मेरी आवाज क्यों इतनी आप लोग तक नहीं पहुंच रही है क्या? मेरी आवाज मैम बहुत दूर से आ रहा है. अब इससे नजदीक कहाँ है? मैम ठीक है आवाज मैम. नेटवर्क यार अब यहाँ तक रहने दीजिए. अब यहाँ से डिफरेंट स्टोरी शुरू हो रहा है. नहीं, फेब्रिक्स का ही डिस्कशन है, लेकिन ये डॉट याद रखिएगा. कल तो क्लास है ही नाम लोगों का. हाँ, यस मैम. यस मैम ऑफलाइन यहाँ से करेंगे. ऑलराइट, ओके मैम. और ऑब्वियसली अटेंडेंस जिनका कैमरा ऑन था उनका अटेंडेंस बन गया है. थ्रू आउट द बैच वही ऑब्जर्व करें, जिनका ऑन है उसका नोट डाउन है, जिनका ऑन नहीं है वो लेफ्ट आउट है. ठीक है, तो सी यू नेक्स्ट क्लास. मेरा बीच में ऑफ था. किसका? मेरा बीच में ऑफ होना और थ्रू आउट द क्लास होना डिफरेंस है ना मैम. मेरा भी हल्का सा बीच में ऑफ हो गया था मैम. चलिए ठीक है, वो मेरे पास रहने दीजिए, वो मैं ऑब्जर्व कर रही थी. चलिए ठीक है, थैंक यू.